Hey, Amara Harinam, Amirabu, Lata, Golden Madhava, Navadip, Takara, hey, Yamura Tatatara, Gopinga Sanohara, hey, dear Arumara, Unduvan, Pada. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Go, go, go. Hey. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Golden Madhava, Navalinga, Dasada, Sri Radha Bhagavatam, Vrindavan, Pada, hey, Sri Radha Bhagavatam, Vrindavan, Pada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Or Premanande, Hari Bol, Srila Prabhupada ki jai. Jasomati Nandana, Braja Bharanaga, Gokula Ranjana. Can't hear you. He can't hear you. A little better. Come on. Okay. It's the holy name, so you can chant it loud. Like that. That's it. So, Canto 10, Chapter 8, Lord Krishna shows the universal form, verses 33 and 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 33 is up? Or 34? 33? Okay. Sagrihitva kara Krishnam Upalabhya hitaisini Yasoda Baya Sambranta Preksanaksam Abhasata Sagrihitva kare Krishnam Upalabhya hitaisini Yasoda Baya Sambranta Preksanaksam Abhasata Sagrihitva kare Krishnam Upalabhya hitasini Yasodabaya Sambranta Preksanaksam Abhasata. I forgot it, yeah. You got it? Ladies? Anyone else? Word for word. Sa, Mother Yasoda, Grihitva, taking, Kare, with the hands, being anxious about what Krishna might have eaten. Krishna, Upalabhya, wanted to chastise him. Hita Asini, because she was anxious for the welfare of Krishna, she became very much agitated, thinking, how is that Krishna has eaten earth? Yasoda, Mother Yasoda, Baya Sambranta Preksana Aksam.
began to look very carefully within Krishna's mouth in fear to see if Krishna had eaten something dangerous. Abhasata began to address Krishna. Translation. Upon hearing this from Krishna's playmates, Mother Yasoda, who was always full of anxiety over Krishna's welfare, picked Krishna up with her hands to look into his mouth and chastise him. Her eyes fearful, she spoke to her son as follows. And verse number 34. Translate. कृष्ण के साथियों से यह सुनकर पिताश्री माता यशोदा ने कृष्ण के मुख के भीतर देखने तथा डांटने के लिए उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया। वे डरी डरी आंखों से अपने पुत्र से इस प्रकार बोली। Translation of verse number 34. Dear Krishna, why are you so restless that you have eaten dirt in a solitary place? This complaint has been lodged against you by all your playmates, including your elder brother Balaram. How is this? हे कृष्ण, तुम इतने चंचल क्यों हो कि एकांत स्थान में तुमने मिट्टी खा ली? यह शिकायत तुम्हारे बड़े भाई बलराम समेत तुम्हारे सभी साथियों ने की है। यह क्यों कर हुआ? Srila Prabhupada's, Srila Prabhupada's short purport. Mother Yasoda was agitated by Krishna's restless behavior. Her house was full of sweetmeats. Why then should the restless boy eat dirt in a solitary place? Krishna replied, My dear mother, they have plotted together and lodged a complaint against me so that you will punish me. My elder brother Balaram has joined them. Actually, I have not done this. Take my words as true. Do not be angry and chastise me. तात्पर्य, माता यशोदा कृष्ण के चंचल स्वभाव से विक्षुब्ध थी। उनका घर मिठाइयों से भरा पड़ा था, तो फिर चंचल बालक ने एकांत स्थान में मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे माता, सबों ने षड्यंत्र करके मेरे विरुद्ध जिससे आप मुझे दंड दें। मेरे बड़े भैया बलराम हमसे मिलते हैं। वास्तव में मैंने यह काम नहीं किया। मेरी बात सत्य मानिए, मुझ पर नाराज ना हो और मुझे डांटें। Om Gyan Timidandasya Girajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pastyaktyade Satarine Vanchakalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Bhaevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama So naughtiness in children is natural. And Krishna is exhibiting that naughtiness, but that naughtiness is part of his nature to do whatever he wants whenever he wants. When he comes to the material world, he acts in such a way as to give pleasure to his devotees and to exhibit his different qualities, different attributes. And he does it for his own transcendental pleasure.
And it seems like it's causing difficulty to others, but actually that difficulty is transcendental happiness. तो ऐसा लगता है कि वो दूसरों को परेशानी मुसीबत में डाल रहे हैं, लेकिन यह जो मुसीबत भी है यह एक दिव्य आनंद है। Because everything about Krishna is wonderful. तो भगवान कृष्ण के बारे में सब कुछ अद्भुत है। Everything he does is perfect. वह जो भी करे वह पूर्ण है। But it's seen sometimes differently from a material point of view. लेकिन भौतिक दृष्टिकोण से यह कभी-कभी वैसा नहीं लगता। Playing the perfect part of a mother, Mother Yasoda, she can't comprehend why Krishna would eat dirt. माता यशोदा एक पूर्ण माता का किरदार निभाते हुए भी है कि समझना कि भला भगवान कृष्ण Like she couldn't comprehend when Krishna was stealing butter either. लेकिन वह माखन क्यों चुराते हैं ये नहीं समझना। She would say when the ladies from the other areas of the village would complain that Krishna is stealing their butter, she would say, "No, we got so much nice butter and milk products. I don't think you're telling the truth. You're not correct." She, अन्य गोपियां माता यशोदा से शिकायत करती थी, तो माता यशोदा कहा करती थी नहीं, वह चुरा के नहीं खाया होगा, उसके घर में खुद ही इतना सब कुछ है। now, but Balaram's saying he ate dirt. लेकिन अभी बलराम जी ने भी शिकायत की कि उन्होंने मिट्टी खाई है। And so Mother Yasoda is taking it serious now. तो इसलिए माता यशोदा से गंभीरता से लेगी। And she's concerned. और इसलिए चिंतित है। And she's feeling anxiety. और इस कारण से वो तनाव में है। The anxiety of love. और यह प्रेम का तनाव है। That in the material world we see people simply exist on anxious activities. They're always full of anxiety. तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा अस्तित्व चिंता और तनाव से भरा है। And they try so hard for something, they don't get it, they're full of anxiety, and in the process of trying, they feel they're always anxious. तो जब भी लोग किसी भी चीज को पाना चाहते हैं, वो उसको लाभ करने की पूरे के पूरे विधि के दौरान उनको समस्याएं रहती हैं। The material world is called kunta, इस भौतिक जगत को कुंठा कहते हैं, which means anxiety. इसका अर्थ ही है कि चिंता। But that spiritual world is called Vaikunta. There is no material anxiety. लेकिन आध्यात्मिक जगत को वैकुंठ कहते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी भौतिक चिंता नहीं। But is there anxiety? लेकिन फिर भी वहाँ पर चिंता है। Yes, but it's not material. वहाँ भी चिंता है, लेकिन यह भौतिक नहीं। It's anxious. She's anxious for the welfare of Krishna. Therefore, her anxiety, and because she has pure love for Krishna, her anxiety is actually pure bhakti. क्योंकि उनकी जो चिंता है वह भगवान कृष्ण के लिए है और वह भी शुद्ध प्रेम के कारण है, इसलिए वह चिंता भी दिव्य है, आध्यात्मिक। And Krishna's stealing or Krishna's eating dirt is pure bhakti. और भगवान कृष्ण का जो चोरी करना, मिट्टी खाना है, सब उसके बारे में सोचना भक्ति है। So everything is perfect. तो सब कुछ पूर्ण रूप से सिद्ध है। But it doesn't appear to be from Mother Yasoda's point of view. लेकिन यह बहुत ही रुचिकर नहीं है माता यशोदा के दृष्टिकोण से। But Krishna doesn't care. लेकिन भगवान कृष्ण इसकी परवाह नहीं He's not going to get blamed. वह He's not going to accept any blame वह दोष नहीं स्वीकार करते हैं, because he doesn't want to get punished. क्योंकि वह सजा नहीं पाना चाहते। And he knows his mother can be very strict. His father, Nanda Maharaj, never punishes him. उसको क्योंकि लगता है कि माता यशोदा बहुत ही कठोर दंड दे सकती है और जो पिता नंद महाराज हैं वो बहुत ही सरल है। Yeah, even in the family, sometimes the mother will say to the father, "You're always spoiling the kid." तो कभी-कभी घर पे आप देखेंगे कि माता है वो पिता से कहती है कि आप बच्चे को बर्बाद कर दे रहे हैं। Mother's love is complete, so she's making sure everything is nice for the child. And if he does something wrong, must be immediately corrected. तो क्योंकि उनका जो प्रेम है वह अपने में पूर्ण है, तो वह हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी बच्चा करे वह सही हो। जैसे ही वह कुछ गलती करते हैं उसे सुधारना चाहती हैं। That's love. तो यह प्रेम है।
Now, this quality of anxiety is very important for devotees to understand. और यह जो चिंता का गुण है यह भक्तों को समझना इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। The great souls, or persons who are actually fixed in devotional service, exhibit anxiety. जो महान आत्माएं हैं जो भगवान की भक्ति में लगी हैं वह भी इस चिंता वाले गुण को धारण करती है। They're anxious to spread Krishna consciousness. वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए चिंतित हैं। They're anxious to perform their service better and more effective. वह अपनी सेवाओं को और भी अच्छे तरीके से और प्रभावशाली ढंग से करने के लिए चिंतित हैं। They're anxious to come up with more and more ideas on how to preach Krishna consciousness. वह इसलिए चिंतित है कि किस प्रकार से नए नए विचारों को वह अमल करें जिससे और प्रचार हो सके। The cook in the kitchen, she's cooking. जैसे कि किचन रसोई में पकवान बनाने, And she's anxious that Krishna will accept this nice offering. तो उसके लिए भी चिंता होना कि भगवान कृष्ण इस भोग को स्वीकार करेंगे। And she's trying her best to make it as nice as possible so Krishna will accept the offering. और वे उसको बढ़िया से बढ़िया ढंग से बनाना चाहती हैं जिससे भगवान कृष्ण उस भोग को स्वीकार करें। Now, this is transcendental anxiety. तो यह एक दिव्य चिंता है। Sometimes you see devotees, they exhibit that, and it looks like something personal. तो कभी कभी आप देखेंगे भक्त भी इस गुण को प्रदर्शित करते हैं और यह कुछ व्यक्तिगत लगता है। Just like sometimes the acharya or the guru will see the deities are not being taken care of nicely. तो जैसे कि कभी कभी आचार्य ने किसी ने देखा कि कोई विग्रह की सेवा ठीक ढंग से नहीं हो रही है। And he'll get an anxiety. और फिर उन्हें एक चिंता हो जाएगी। And he'll try to do something to make sure everything is correct, nice. तो फिर वह यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक ढंग से हो। When Srila Prabhupada was in Holland, the Netherlands, जब श्रील प्रभुपाद हॉलैंड में थे, they were doing a deity installation. तो विग्रहों की स्थापना हो रही थी। And it was being broadcast on television. और इसको टीवी पे भी प्रदर्शित किया, प्रसारण हो रहा था। And so they were they were actually doing a yajna for the deities, and they were bringing all of the items to be prepared for the yajna. तो उस समय यज्ञ की तैयारी चल रही थी और इसके लिए सारी सामग्री आ रही थी। And the devotees, they were new devotees. They didn't know what was supposed to be done. तो भक्त चूंकि पूरे नहीं थे तो उनको मालूम नहीं था कि किस प्रकार से क्या करना है। We made that mistake so many times. Prabhupada would always correct us. तो वो कई बार गलतियां करते थे और श्रील प्रभुपाद उनमें सुधार करते थे। So devotees were bringing the wrong stuff. They were doing everything. Everything was being done wrong, and it was on television. तो भक्त लोग गलत गलत सामग्रियां भी ला रहे थे और सब कुछ गलत तरीके से हो रहा था और यह टीवी पे प्रसारित भी हो रहा था। And Prabhupada was shouting. और श्री प्रभुपाद चिल्ला रहे थे। Yeah, not like that. Why you're bringing that? That goes over here, not over there. तो श्रील प्रभुपाद डांट रहे थे कि तुम यह सामान यहाँ पे क्यों ला रहे हो, इसको वहां पे रखो, उसको उठा के इधर रखो, ऐसा क्यों कर रहे हो। Prabhupada was really animated. He was just fired up. He was just chastising and telling people, do it the other way. You're not doing it right. तो श्रील प्रभुपाद बहुत गुस्सा थे, भक्तों को डांट रहे थे, बोल रहे थे इसको इस प्रकार से नहीं उस प्रकार से करो। So there was one hippie. He was there. तो वहां पे एक हिप्पी भी था। And he had come to some of our programs. और वह हमारे कुछ प्रोग्राम्स में कार्यक्रम में आया था। So he was looking at Prabhupada. तो वह श्रील प्रभुपाद को देख रहा था। Prabhupada saying, he's not acting properly. तो उसको लगा कि प्रभुपाद ठीक तरह से आचरण नहीं कर रहे हैं। So he went up to Prabhupada and said, "Chant Hare Krishna." तो उसने श्रील प्रभुपाद के पास जाके कहा हरि नाम जप करिए। That's the last thing Prabhupada wanted to hear. तो यह नहीं है जो श्रील प्रभुपाद सुनना चाहते थे। And Prabhupada just came back, kept going and just correcting people one after another. तो श्रील प्रभुपाद भक्तों में सुधार करना जारी रखे। Somebody who was watching it on television, तो जो कोई एक व्यक्ति टीवी पर देख रहा था, they said to the devotees later,
your spiritual master is really wonderful. उसने भक्तों से कहा कि आपके जो गुरु महाराज हैं वास्तव में अद्भुत हैं। They could see beyond the externals. तो वह इसके अंदर भी देख सकते हैं। So Prabhupada, many times he would really be in transcendental anxiety. Krishna was not being served nicely. तो श्रील प्रभुपाद भी कई बार ऐसी दिव्य चिंता को प्रदर्शित किया करते थे जब भगवान कृष्ण की सेवा सुचारू रूप से नहीं होती Because the more you have love for Krishna, the more you want to see everything done nicely for Krishna. क्योंकि जब ये आपके पास कृष्ण के लिए प्रेम होता है तो आप हर एक चीज को अच्छे ढंग से किया जाना चाहते हैं। And it's not done, then that feeling of anxiety comes out in different ways. तो जब वह सेवा अच्छे से नहीं होती तो वह चिंता कई रूपों में प्रदर्शित होती So है। transcendental anxiety is not like material anxiety. तो यह जो दिव्य चिंता है यह भौतिक स्तर पर नहीं होती। Now, how do you know the difference? तो आपको अंतर कैसे पता चलेगा? Material anxiety causes one to become depressed and lose enthusiasm. तो भौतिक चिंता के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और हतोत्साहित हो जाता है। Transcendental anxiety increases one's devotional service. और दिव्य चिंता से किसी व्यक्ति की जो सेवा है वह उसमें बढ़ोतरी होती है। So that anxiety exhibited by devotees actually increases their devotional service and is a very wonderful offering to Krishna. तो जो यह दिव्य चिंता है इसके कारण भक्तों की सेवा बढ़ जाती है और यह भगवान कृष्ण के लिए एक बहुत ही बढ़िया भेंट है। So Balaram is increasing Mother Yasoda's anxiety by telling her, "Hey, Krishna's eating dirt." तो बलराम जी माता यशोदा की चिंता को बढ़ा रहे हैं यह बताते हुए कि भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई है। So that anxiety is good. तो यह चिंता अच्छी है। If we don't have transcendental anxiety, that means we said that's something we need to work on. तो यदि हमारे पास यह दिव्य आध्यात्मिक चिंता नहीं इसका मतलब हमें कुछ काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। Because it is a quality that attracts the Lord. क्योंकि यह एक ऐसा गुण है जो भगवान को आकर्षित करता है। So Krishna here, he's lying. God's a liar. लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं। Yeah, he ate some dirt. उन्होंने मिट्टी खाई। And now he's saying he didn't do it. और अभी वह कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। So, is that good? तो क्या यह बढ़िया है? If you lie, you're in trouble. यदि आप झूठ बोलेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। If Krishna lies, everybody likes it. लेकिन भगवान कृष्ण यदि झूठ बोले तो सब उसे पसंद करते हैं। Krishna will pass urine on the floor. If you try that, भगवान कृष्ण फर्श पर ही मूत्र विसर्जन कर देते थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप समस्या में पड़ जाएंगे। you'll get chastised for that. आपको इसके लिए बहुत डांट खानी पड़ सकती है। So, it says in the Shastras that, what is that verse? That whatever great men do, common men follow in their footsteps, whatever standards they set by exemplary reactions, all the world pursues. Yad yad avarchaista tatta devichara jara sayat karakuruto lokaschand anuvartante. Yeah. भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि मैं जैसा भी आचरण करता हूँ पूरी दुनिया मुझे उसका अनुशीलन करती है। So people will think, well, God's doing it, I can do it. लोगों को लगता है कि भगवान यह कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। He's lying, so I guess it's okay. अब भगवान झूठ बोल रहे हैं तो लगता है ठीक ही है। He dances with 16,108 gopis. यदि वह 16,108 गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। He marries 16,108 queens. वह 16,108 रानियों के साथ विवाह करते हैं। Well, maybe it's nice to have a few extra girlfriends, right? तो ये अच्छा है मैं भी कुछ 2-4 ज्यादा महिला मित्र बना सकता हूँ। God does it, must be good, right? अगर भगवान कर रहे हैं तो बढ़िया ही होगा। Tejasam Rajosaya, the statement in the Shastra says, one should not imitate those who are powerful.
तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि जिनके पास ज्यादा शक्ति हमें उनका अनुकरण नहीं करना It's चाहिए। very common to imitate. तो हम अनुकरण नहीं कर सकते। Like Shiva, he smoked ganja, right? जैसे कि शिव जी ने जहर पिया था। Yeah, so why not? Shiva did it. तो जैसे शिव जी ने गांजा पिया तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। But then we say, well, he smoked ganja, but he also drank an ocean of poison. So you try that also. Then you can come up to the same quality. तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, गांजा पीना चाहते हैं शिव जी के नाम पे, तो आप उनका जहर का भी अनुकरण करके देखिए, तब आप उस गुण में आ जाएंगे। Yeah, Krishna danced with many gopis. He had many wives, but he also lifted Govardhan Hill. भगवान कृष्ण कई गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, कई रानियां हैं, लेकिन उन्होंने गोवर्धन पर्वत भी उठाया। Sometimes they say, well, Lord Ramachandra, he ate meat. तो कई बार लोग कहते थे कि भगवान, Yeah, so there's some story in the Ramayana. कई लोग यह भी कहते हैं भगवान रामचंद्र ने मांस खाया। That was very fashionable that people want to imitate great people and think it's the same thing. तो लोग महान आत्माओं का अनुकरण करना चाहते हैं और सोचते हैं कि यह साधारण ही बात है, समान है। Prabhupada tells one story श्री प्रभुपाद एक कहानी बताया करते थे where this one veterinarian, जहाँ पे एक veterinarian, with those who take care of animals, एक पशु चिकित्सक जो जानवरों का सेवा करते थे, animal doctors, yeah. जानवरों का चिकित्सक, And so he's teaching his shiksha, his chela, his disciple, how to do the occupation. तो वह अपने शिष्यों को उपचार की विधि बता रहे थे। And so he's showing different things, and this chela he's learning. तो अपने शिष्यों को कई सारी चीज बता रहे थे और उनके चेला भी उसको सीख रहे थे। And then one day a horse comes in with a big lump in his throat. तो उसके बाद एक दिन एक घोड़ा आता है, उसके गले में एक बहुत कुछ लटका हुआ था। So the veterinarian calls for a rubber hammer. तो जो पशु चिकित्सक है वह एक रबड़ की हथौड़ी मंगाते हैं। And he takes it and he starts hitting the horse where the big lump in his throat is, and he like that. तो वह जो पशु चिकित्सक हैं, उस जो घोड़े के गले में बहुत सूजन थी उस पे मारने लगते हैं And हथौड़े after से। some time, the lump was gone and the horse was fine. और कुछ देर बाद वह जो सूजन थी वह चली गई और घोड़ा बढ़िया ठीक हो गया। So his disciples watching, तो उनका जो शिष्य है वह देख रहे थे। So after some time, the disciple, he has his own practice now. He's just beginning. तो अब कुछ समय बाद शिष्य सीख गया, अब वह भी पशुओं की चिकित्सा करने लगा। So a horse comes in with a big lump. तो उसके पास फिर से एक घोड़ा आया, उसके गले में बहुत So he सूजन थी। remembers what his guru doctor told him, showed him. और उसको याद था कि उसके जो गुरु डॉक्टर थे पशु चिकित्सक, उन्होंने And he उसे क्या starts hitting सिखाया। the animal, the horse, in the throat. और वह भी उस घोड़े को रबड़ के हथौड़े से मारने लगा। And the horse is going crazy. और घोड़ा एकदम पागल हो रहा था। His guru comes. What are you doing? और उसके गुरु आते हैं और फिर बोलते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? Why are you trying to kill that animal? तुम उस जानवर की हत्या क्यों करना चाहते हो? Guru Maharaj, I'm doing what you showed me. नहीं नहीं महाराज, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने मुझे सिखाया था। You stupid. अरे नालायक। That other horse, he had a watermelon stuck in his throat, and I was breaking it up so he could swallow it. तो उस घोड़े के गले में एक तरबूज का बड़ा हिस्सा अटका हुआ था, तो मैं उसको हथौड़े से मारकर तोड़ दिया और वह निकल गया। So imitation is cheap. तो यह अनुकरण बहुत ही सस्ता है। People like to imitate. They think by imitating they become like what they imitate. तो लोग अनुकरण करना चाहते हैं और सोचते हैं ऐसा करके वह उसी के समान बन जाएंगे। But one should follow accordingly. Therefore, anusharan, anuskaran. लेकिन उनको ठीक ढंग से पालन करना चाहिए, इसीलिए दो शब्द हैं, अनुकरण अनुसरण। Anuskaran means to imitate. Anusharan means to follow, to learn what is right and what is not right. तो अनुकरण का मतलब यथावत नकल करना और अनुसरण का मतलब यह सीखना कि क्या सही है क्या नहीं। But what is very dangerous, sometimes great souls, persons who are advanced, they exhibit sometimes ecstatic symptoms.
तो जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार जो महान आत्मा हैं वह सात्विक विकार को प्रदर्शित किया करते हैं, And others think, oh, well, I guess I can be ecstatic too. तो अन्यों को लगता है कि अरे वाह, लगता है मुझ में भी यह सात्विक विकार आ सकते हैं। There's a class of Brahmins. ब्राह्मणों का एक वर्ग है, What they do is they eat chili, वे क्या करते हैं, वह मिर्ची खाया करते हैं, and it makes them shed tears because it's so hot, you know. और इसके कारण उनको आंखों में आंसू बहुत आते हैं, And then they display that as some kind of ecstasy. और इसको फिर वह एक अपने सात्विक विकार के रूप में प्रदर्शित किया करते हैं। Chili ecstasy. यह उनकी मिर्ची का विकार है। Not heart ecstasy, but chili ecstasy. तो यह उनके हृदय का नहीं बल्कि मिर्ची का विकार है। So this is quite common, and Srila Prabhupada was always very careful not to do things that people would imitate. तो श्रील प्रभुपाद हमेशा बहुत ही सावधान थे यह के लिए कि लोग यह काम ना करें जो अनुकरण हो। But sometimes circumstances were different. लेकिन कई बार परिस्थितियां अलग हुआ करती थीं। One time Prabhupada wanted some nice lemon drink. एक बार श्रील प्रभुपाद को एक बहुत मतलब बढ़िया नींबू पानी चाहिए था। So this was in America. So they gave him 7-Up. तो यह Sprite and 7-Up, you know. ये अमेरिका की बात है, तो भक्तों ने स्प्राइट 7-Up लेकर आए। And Prabhupada drank. He said, "Oh, this is very good." और श्रील प्रभुपाद ने इसे पिया और उन्होंने कहा यह बहुत बढ़िया है। Right after that, all the temples were ordering 7-Up everywhere. उसके बाद से सारे मंदिरों में 7-Up की मांग बढ़ गई। All the big trucks were pulling up to the temples, delivering cases of 7-Up for the devotees. और फिर ट्रक भर भर के सारे मंदिरों में 7-Up की सप्लाई होने लगी। And Prabhupada found out. I said, "What are they doing?" और श्री प्रभुपाद को पता चला और वो सोचे क्या हो रहा I है। just wanted something to drink. मैं इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं पीना चाहता था। So sometimes, yeah, it's like that. Yeah. So imitation is cheap. तो कभी कभी इस प्रकार से होता है, ऐसा जो अनुकरण है वह बहुत ही साधारण सस्ता है। So the process is to follow in the footsteps तो हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए and to perform the devotional service according to the level of practice that you are on. तो हमें भक्ति का अनुशीलन उस प्रकार करना चाहिए जिस भक्ति के स्तर पर हम हैं, And not try to imitate someone who is on a higher level. और जो भक्ति के उच्च स्तर पर है हमें उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। Yeah, because imitation is what it is. It's imitation. क्योंकि अनुकरण ही है। Well, Mother Yasoda, she's really agitated. Right? But her agitation is filled with love because Krishna is eating something that's bad for him. तो माता यशोदा बहुत ही चिंतित है क्योंकि भगवान कृष्ण ने कुछ ऐसा खाया है जो उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। Yeah, if we go on with the verses, I won't go ahead because it's such a nice, these are beautiful verses. But it really describes Mother Yasoda's pure love for Krishna. इन श्लोकों में भगवान माता यशोदा का भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्रदर्शित हुआ है And Krishna's independent nature. और भगवान कृष्ण का जो पूर्ण स्वाधीन व्यवहार है वह भी प्रदर्शित है। He does what he wants whenever he wants. वह वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है But everyone benefits. और उससे सभी को लाभ मिलता है। Whether he lies, he steals, he eats dirt, passes water on the floor, doesn't matter. It's all transcendental. And when devotees hear it, they say, "Jai Krishna." तो भगवान कृष्ण जो भी करें, चाहे वह झूठ बोलें, चोरी करें, सब कुछ दिव्य है और भक्त लोग इसको सुनते हैं तो भी उसकी जयकार लगाते हैं। But when we do it, we get punished. लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हमें सजा मिलेगी, Chastised. डांट भी मिलेगी। So transcendental anxiety cannot be imitated. It's something that comes by way of one's advancement in Krishna consciousness. तो यह जो आध्यात्मिक चिंता है इसका भी अनुकरण नहीं किया जा सकता, यह भक्ति में उन्नत होने पर स्वतः ही आ जाती है। I'll mention one other pastime of Krishna. मैं आपको भगवान कृष्ण का एक अन्य लीला बताता हूँ। Whereas when Krishna and all the cowherd boys, along with Balaram, were in the forest, a huge forest fire broke out.
तो जब भगवान कृष्ण बलराम भगवान के साथ अन्य गोप मित्रों के साथ भी एक वन में थे और जंगल में आग लग गई थी, all of a sudden everything became dangerous. और अचानक से सब कुछ बहुत ही भयावह हो गया। And the cowherd boys were fearful, so they called out to Krishna, Krishna, save us. और जितने भी गोप बालक थे वह पूरा चिंता में भर गए और वह पुकारने लगे, कृष्ण हमारी रक्षा करो। So Krishna said, all right, close your eyes. और भगवान कृष्ण का ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। And he swallowed the whole forest fire. और उन्होंने पूरी की पूरी जंगल की आग को निगल लिया। And then he said, all right. And they opened their eyes and everything was nice. Forest fire was gone and everything was like it was before. और सबने आंख खोली और लगा कि अरे सब कुछ ठीक है, पहले ही जैसा है, सब बढ़िया है। So why did Krishna tell them to close their eyes? तो भगवान कृष्ण ने उनको आंख बंद करने को क्यों कहा था? Because Balaram will now say, now before he was eating dirt, now he's eating fire. क्योंकि नहीं तो फिर बलराम जी कहेंगे कि पहले तो यह मिट्टी ही खाता था, बाघ भी खाने लगा। Mother Yasoda would really get in. She would probably die. तो माता यशोदा तो चिंता के मारे मृत प्राय हो जाएंगी। So Krishna performed that pastime, so no one would see him eating fire. तो भगवान कृष्ण ने यह लीला इस प्रकार से की जैसे कोई भी ना जान पाए कि भगवान कृष्ण आग भी खा लेते हैं। Everything Krishna does is wonderful. Okay, so we'll stop here. Any questions? Transcendental anxiety, Krishna's mischief. Yes, Prabhu. Thank you so much, Maharaj, for the amazing class. The question is, of course, that Maharaj will not have transcendental anxiety, but in Krishna consciousness, sometimes we have ordinary anxiety. And as you mentioned, when devotees sometimes show the symptoms of frustration, stress, too much depression, like that, because of too much anxiety. So, what is the proper what is the proper quantum of services for a devotee? How should we balance? Because we generally say a devotee should be happily practicing Krishna consciousness. He should not be too much stressed or frustrated. Yeah. So, what is proper for practicing? Well, go ahead, translate that. हरे कृष्णा। महाराज, प्रश्न ये है कि अभी भक्ति में मैं उतना ज्यादा उन्नत नहीं हुआ हूँ कि मुझ में यह दिव्य चिंता वाला गुण आ सके, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं हम कुछ सेवा करते हैं तो हमें भी कुछ चिंता होती है, तो एक साधक के लिए वह कितनी सेवा करे कि वह बहुत ज्यादा तनाव में ना हो, क्योंकि हम कहते हैं कि एक भक्त को बहुत ही खुशहाल तरीके से प्रसन्नता से कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए, तो कितना तनाव ले? Just like it says that one should accept as much service as one can do nicely. तो ऐसा कहते हैं किसी व्यक्ति को उतनी ही सेवा स्वीकार करनी चाहिए जितने को वह अच्छे ढंग से कर सकता है। But this is Iskcon. लेकिन ये इस्कॉन है। That's the answer. यही उत्तर है। Which means that, we're a very powerful preaching force and we're always trying to inspire more and more outreach. So, Srila Prabhupada was like that also. He would give us more service, and sometimes the devotees would say, all right, Prabhupada, what service should we stop so we can do this service? Prabhupada, what do you mean stop? You add that on. That's what तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम इस्कॉन में ज्यादा प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद भी ऐसा ही किया करते थे। जब श्रील प्रभुपाद भक्तों को नई सेवा दिया करते थे तो भक्त लोग बोलते थे श्रील प्रभुपाद कि हम अपनी सेवा को बंद करके सेवा चालू करें। श्रील प्रभुपाद कहते थे नहीं, उसी सेवा में जोड़ दो। But the Shastric principle is one should to accept as much service as one can perform nicely. That is the statement. Yeah. तो लेकिन एक भक्त को उतनी ही सेवा स्वीकार करनी चाहिए जितना वो ठीक ढंग से कर सके। Srila Prabhupada did chastise very mildly one devotee. He was working hard
really hard for many days, and after he finished his project, he took rest for 2, 3 days, and Papa said, "We don't do like that. We push, and then all of a sudden we can't do anymore. We break, and we have to stop for 2, 3 days." So we should keep continuous in our devotional service. तो एक बार एक भक्त सेवा करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने उनको डांट लगाई थी क्योंकि उन्होंने अपना कोई योजना जो कर रहे थे उसमें बहुत मेहनत से कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन उसको पूरा होने के बाद 2-3 दिन उन्होंने आराम किया। श्रील प्रभुपाद ने कहा हमें इस प्रकार से सेवा नहीं करनी चाहिए, हमेशा निरंतर रूप से सेवा चलनी चाहिए। So the statement is, know thyself, know what you can do or what you can't do, and try to do your best. We always make a mistake. Sometimes we do too much, sometimes we do too little, or sometimes, we regret not accepting more service, we regret taking on too much. So it's something you have to find. तो आप खुद को जाने, अपना बेहतर सबसे बढ़िया प्रयास करना चाहें, और आप खुद को ही आपको यह समझना है कि आप कितना कर सकते हैं। The danger is that we don't take enough time for sadhana and we put all our emphasis on service, and then we get weak in our service because we're not hearing and chanting properly or enough. तो समस्या ये है कि हम अपनी साधना पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसके कारण हमारी सेवा भी कमजोर हो जाती है और हमारा श्रवण कीर्तन सब कुछ पूरा कम हो जाता है। And sometimes we were losing devotees in New Vrindavan because of that, because we put so much emphasis on building the community that devotees were minimizing and sometimes not even performing sadhana, just doing service, seva. तो नए वृंदावन में इस कारण से हमने कई सारे अपने भक्त भी खो दिए, क्योंकि हम समुदाय को उस आगे बढ़ाने में, निर्माण में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, इस कारण भक्त साधना नहीं कर पा रहे थे, इसलिए कई भक्त चले गए। So basically it's up to the leaders, those who are in charge, to make sure the devotees are working nicely and they're getting everything they need to do their service. तो हम नेताओं को ही यह देखना है, मंदिर में जो वरिष्ठ हैं उनको देखना है कि जो भक्त हैं उनके पास उनको जो भी चाहिए, वह उनको आवश्यकता है, वह पूर्ण रूप से हो रही है, वह सेवा ठीक ढंग से कर रहे हैं। When we first started the movement, it was putting the service before the devotees. Now we're starting to see the importance of taking care of the devotees, so eventually they can do more and more service. तो पहले जब आंदोलन शुरू हुआ था तो बहुत सारी सेवाएं थी, लेकिन अब हमें भक्तों का ख्याल रखना है जिससे भक्त बने रहें और ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें। And Prabhupada's preaching in 1974, he said, we want to establish this varnashram. 1974 में प्रचार करते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा हमें वर्णाश्रम की स्थापना करनी है। Daivi varnashram. दैव वर्णाश्रम। Spiritual varnashram, which means to educate devotees and have them work according to their nature. और आध्यात्मिक वर्णाश्रम कि हम उनको, इस भक्तों को इस प्रकार से प्रशिक्षण दें कि वह अपने गुण के अनुसार ज्यादा सेवा कर सकें। Because when you work according to your nature, you can do so much more, and you can also become very creative in your service when you work according to your nature. क्योंकि यदि आप अपने गुण के अनुसार काम करते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया ढंग से और ज्यादा सेवा कर सकते हैं। But those who are fixed in devotional service, they can do any service. और यदि आपके पास कोई निर्धारित भी सेवा है तो आप उसे भी कर सकते हैं। So understand, at least from your own perspective, how much you can do nicely. तो आप अपने दृष्टिकोण से यह पता लगाइए कि आप कितना सेवा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। But if you put emphasis on hearing and chanting, then we can stay strong and fixed in our service. We should hear nicely, chant our rounds nicely, associate with devotees, read the books, study the books, understand the books. यदि हम श्रवण कीर्तन अच्छे से करें, भक्तों का संग ले, पुस्तकों का अध्ययन करें, तो हम अच्छे से सेवा कर सकते हैं। Yeah. So there has to be a balance. तो एक संतुलन बना रहना चाहिए। Finding the balance is not always easy. तो यह संतुलन हमेशा बना के रखना, निकालना बहुत मुश्किल है। I've been out of balance since I began. I just made a statement. I said, I've been out of balance since I started Hare Krishna. So.
I'm still working on trying to find that balance. लेकिन जब से हरे कृष्ण चालू है यह संतुलन बिगड़ गया. Yeah, because when you're traveling and preaching, it's almost impossible to find a balance. क्योंकि यदि आप यात्रा कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं तो ये संतुलन बना के रखना बहुत मुश्किल है. But one thing I do, and I'm very strict, एक चीज जो मैं करता हूँ I chant 16 rounds before I do anything. कि मैं कुछ भी काम करने के पहले अपनी 16 माला पूरा कर And लेता that helps me to be able to do whatever else I have to do nicely without any anxiety. हूँ. क्योंकि ऐसा करने से मैं बिना किसी चिंता के अपनी माला अच्छे ढंग से कर लेता हूँ No, और that- सेवा भी अच्छे से होती है. फिर putting your sadhana, first, especially your japa, is very important. आपकी साधना विशेष रूप से आपका जप बहुत ही महत्वपूर्ण है. I mean, for pujaris, it's not always possible. They have to get up, wake up the deities, and then start doing the puja. But for most of us, we can arrange our schedule. We have enough quality time to hear and chant nicely. तो पुजारियों के लिए यह संभव नहीं है क्योंकि उनको अर्चना करनी पड़ती है सुबह से उठ के. लेकिन ज्यादातर भक्तों के लिए यह बहुत ही सुलभ होगा कि वह अच्छे ढंग से जप को करें सुनते हुए. Anything else? Any other questions? Okay. I hope. Question number 2. This is a follow-up question. You mentioned that Srila Prabhupada did not like yogis taking a break or rest after some services. But sometimes yogis feel that I can take a break and perform my Latin sadhana, just like suppose reading for hours together and going and spending time with the devotees and hearing for so many hours. And Prabhupada was referring to stopping your prescribed service. That's what he was referring to. One devotee had worked so hard, but then he couldn't maintain his service after that. That was Prabhupada's point. But to take a Shastri break, we do that. We go on yatras many times. We spend more time. Sometimes we do these different programs of Kirtan Mela, and even devotees have done things with Shastra, sitting and studying Shastra for days. That's fine, that's all bhakti. But if you're supposed to be doing something else at that time and you're required to do it, then that's different. Sorry about that. उन्होंने प्रश्न किया कि जैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हम कुछ दिनों के लिए विराम ले लें अपनी सेवा से, तो क्या ये इस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसको किस प्रकार से सुनियोजित किया जा सकता है. तो महाराज बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद यही नहीं चाहते थे कि हमारी जो भी सेवा है उसको हम रोक के दूसरा कुछ करें. लेकिन यदि हम शास्त्रोक्त विधि से हम अपने आप को सेवा में किसी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं. जैसे आप कुछ दिनों का आराम लेने के कुछ यात्रा में जा सकते हैं, आप कीर्तन मेला में भाग ले सकते हैं, श्रवण कीर्तन कर सकते हैं. जैसे कि नए भक्त घंटों घंटों बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं. तो इस प्रकार से आप अपनी सेवा जारी रख सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लगाना है. Any other questions? Okay, we can stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Sri Radha Madan Mohan ki jai. His Holiness Chandramauli Swami Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai.